Hello dear students, welcome to the teleclasses on Business Studies and Management. Today we will read on a topic which is very important and relevant not only for business houses or corporate houses, but sometimes knowingly and unknowingly we use it in our daily lives. So today we will read management, but not in our context, but in context of business or corporate houses. Dear students, in your first year commerce, you have read about business. What are the various objectives of the business? What are the various forms of business? As we all have read that every business has some objectives to be achieved. Now, have you ever given a thought how to achieve these objectives? How business will achieve its objective of earning profit or some other objectives which it has? It can. This very term that we are going to cover today, that is management, helps every business to achieve its goal or objectives. Every business has factors of production. We have men, money, machine and material, which are to be put together effectively and efficiently so that goals can be achieved. Who will help in achieving these goals? It is the management, or see, it's a manager, a single person or group of persons. Now let us see what is this management. Traditionally, if I am going to explain management, then I can say management is an art of getting things done by others. That means you have to get the work done by others. You need to see whether they are doing the works or not. But many people have found some loopholes in it. As of, आप एक काम कर रहे हो, आपको कुछ अचीव करना है, लेकिन आपने उसे सही तरीके से अचीव किया या नहीं, कैसे पता चलेगा? आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो या नहीं? आपको फंक्शन सुबह 10 बजे स्टार्ट करना है, 5 बजे तक चलेगा. आपने फंक्शन जो है स्टार्ट कर लिया, मगर आपने ठीक टाइम पे स्टार्ट किया और ठीक समय पर ही उसको अंत किया, ये कौन देखेगा? कोई तो होना चाहिए ना. तो ये बिजनेस में भी इस तरह के काम होते हैं. काम सही समय पर शुरू हुआ या नहीं, अच्छे से ख़त्म हुआ या नहीं, देखने के लिए कोई तो चाहिए. कौन है ये कोई? तो मैनेजमेंट. Management will see whether the works are done in proper time or not. So therefore it calls for the modern concept. And what exactly is the modern concept? There are certain terms which are added to make it more dimensional, more effective. These terms are, let us read the meaning of that. As per the modern concept, management is considered as a process of getting things done with an aim of achieving goals effectively and efficiently. So here 3 words are added. One is process, second one is effectively, third one is efficiently. Now, what is this traditional and the modern concept we have covered? Now let us see what is this process. A process is a set of activities that are ongoing and interrelated. Ongoing means that the activities are done in step by step, where responsibility is passed from one activity to the next. So management is also a process. You know why? Because there are series of activities which are performed step by step, and these activities are interrelated. What are these activities? These activities are planning, organizing, staffing, directing, controlling. About all these things we will be covering in our subsequent classes. अभी ऐसा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आपने कंट्रोलिंग कर दिया फिर आपने मनमर्जी ऑर्गेनाइजिंग कर ली. नहीं,
ये जो फंक्शंस है, इसे फंक्शंस कहा जाता है मैनेजमेंट का। ये जो सारे फंक्शंस हैं, इसे सिस्टमैटिकली किया जाता है, जो शुरू होता है प्लानिंग से और ख़त्म होता है कंट्रोलिंग पर। फिर से शुरू होता है प्लानिंग से, फिर ऑर्गेनाइजिंग आएगा, स्टाफिंग आएगा, डायरेक्टिंग आएगा, फिर कंट्रोलिंग आएगा। नाउ लेट अस कवर द नेक्स्ट टर्म, इफेक्टिव। Being effective or doing work effectively basically means finishing the given task. Effectiveness is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. आपने जो काम शुरू किया है उसको एंड रिजल्ट तक पहुंचाना है और ठीक तरीके से वो संपूर्ण हुआ या नहीं ये देखना मैनेजमेंट का काम है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट means doing something effectively. Then comes your third term, that is the efficiency. Efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. There is a kind of cost benefit analysis involved and the relationship between inputs and the outputs. ऐसा होता है कि आपने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया लेकिन कॉस्ट तो बहुत बढ़ गया भाई, तो क्या फ़ायदा आपके ऑर्गेनाइज करने का कोई फंक्शन। आपने फंक्शन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया, ये तभी कहा जाएगा जब आपने कम रुपए खर्च करके एक बहुत शानदार सी फंक्शन का आपने फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। सो दैट्स वेयर वी से एफिशिएंसी। सो इफ वी आर गोइंग टू क्लब ऑल दीज वर्ड्स एंड सी what is management, then we can say that management is defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Various definitions are given by many people. I have highlighted two people about whom and about whose theories you will be reading in our subsequent classes. F.W. Taylor has said, management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way. See here, cheapest way, which shows efficiency. Henry Fayol has said, to manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control, which shows that it is a process. Now, after discovering what is management, let us discover what are the various characteristics of management. Management has got various characteristics. Let us discuss one by one. Goal oriented. Management is goal oriented. As I have said, every business has certain goals to be achieved and management aims in achieving those goals. So we say management is something to achieve and the something is the goals of your organization. Second, management is universal. Universal. What does it mean? It means that management is not only applicable to one single organization, but it is applicable to various forms of organizations, whether it is you take any form of business, whether you take sole proprietorship, you take partnership, you take company firm, whether you take a business firm, you take a non-profit organization, you take anything. Management concept can be applied there. There is one more word written there, pervasive. Pervasive means something related to levels of management. Dear students, we have 3 levels of management. One is your top level, second one is your middle level and third one is your lower level. हम इसके बारे में subsequent classes में cover करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी ये जानना ज़रूरी है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट जो है वो केवल टॉप लेवल में जो अधिकारी हैं उन्हीं का काम है, या मिडिल लेवल के लोग ही करेंगे, या लो लेवल के लोग बिल्कुल कर ही नहीं सकते। हम ऐसा कह ही नहीं सकते। सो मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and it can be applied and used by any level of management. Then, multidimensional. Management is multidimensional in a sense that management is applied not only to people but to the work they are doing and to the method with which they would be doing the work. So when I say कि manage करना है तो सिर्फ लोगों को manage नहीं करना है, आपको लोगों को भी manage करना है, साथ में क्या काम कर रहे हैं उसको मैनेज करना है, प्लस काम को किस तरीके से करना है उसको भी मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट जो है ये तीनों पे लागू होता है,
इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने जस्ट अभी पढ़ा प्रोसेस में प्लानिंग से शुरू होता है, कंट्रोलिंग पे खत्म होता है, फिर से वो प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है और फिर सारे स्टेप्स कवर करके कंट्रोलिंग। सो ये जो प्रोसेस है ये ऑन गोइंग है, कॉन्टिन्यूअस है, बंद नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। देन कम्स डायनामिक। मैनेजमेंट इज डायनामिक, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। व्हाट चेंज एंड हाउ चेंज? वी नो एवरी बिजनेस ऑपरेट्स in an environment. That environment can be internal, can be external. So what is the point? Depending upon the changes in the internal or the external environment, the management concepts and its applicability will change. It is a group activity. Management is not only applied to one person, it is applied to a group of people whose objective is to achieve the organizational goal. Then the last one is management is intangible. हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। इंटैंजिबल का मतलब है हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं। सो यू कांट सी एंड टच मैनेजमेंट, बट यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट वंस एवरीथिंग इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, देयर इज नो वेस्टेज, देयर इज a very good result, then you say that the management of a company, management of a business is too good. Then let us cover the objectives of management. Basically, we have got 3 objectives of management. One is your organizational objective, social objectives and personal objectives. Let us cover it one by one. Organizational objective. Basically, when I say that management is applicable to business, for what reason? Basically, for earning a reasonable profit so that those investors who have invested their money in the business can get something. They will get a good return. बिजनेस पे पैसे लगाए हुए हैं लोगों ने, तो आप प्रॉफिट कमा के नहीं दोगे तो वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे आपके बिजनेस में? तो ठीक है ना, फिर आपको रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना है। दूसरा है प्रॉफिट अर्न करना है क्यों? फॉर सर्वाइवल एंड फॉर ग्रोथ एंड फॉर सॉल्वेंसी। क्या मतलब है इन तीनों का? सर्वाइवल मतलब आज बिजनेस शुरू किया तो कल खत्म होगा, ऐसा तो नहीं सोचना है। हमने शुरू किया तो सोचेंगे कम से कम 20-25 साल तो चले, तो फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। Solvency. What is solvency? The ability to honor the obligations as and when arise. Liability को पे कर सकते हो आप, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके बिजनेस में। तो you need to achieve, the management wants to achieve the survival and solvency of the business. Growth and expansion. जहाँ हम वहीं नहीं रहना, बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, उसको एक्सपैंड करना है आपको. So it is required for the growth and expansion of the enterprise. एंड देन ये सब करने का क्या मतलब है कि अपना जो रेप्यूटेशन है, जो गुडविल है बिजनेस में, मार्केट में, उसको रेज करना है. यू नीड टू बिल्ट अप गुड रेप्यूटेशन ऑफ योर्स, यू नीड टू इंक्रीज गुड रेप्यूटेशंस ऑफ ऑल. सो बेसिकली व्हेन अ बिजनेस with the help of management, these are the organizational objectives which it wants to achieve. Now let us go for covering up of social objectives. सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली बिजनेस जो है वो सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो व्हेन यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी यू हैव गॉट सम ऑब्लिगेशंस टुवर्ड द सोसाइटी, है ना? तो क्या ऑब्लिगेशन है आपका? तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है. व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस? यू नीड टू प्रोवाइड quality of goods and services at a fair price to the people, to the consumers basically. You need to make honest payment of the income tax to the government. You need to conserve your environment and the natural resources which you are using for your business. And there should be fair dealings with your suppliers and dealers and competitors. And the last one is preservation of ethical values of the society. ठीक है, मैं बिजनेस करूँगी इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है ब्राइब करती फिरूँ, है ना? ये सब चीज़ें मैनेजमेंट में का ऑब्जेक्टिव नहीं है. फेयर डीलिंग्स करके, सारे अच्छे एक्टिविटीज़ करके सोसाइटी में एक नाम क्रिएट करना है. So these are the social objectives which every management wants to achieve. Personal objectives. The personal objectives of the organization is not to achieve only the objective of the organization, but to see that the employees of the organization are also satisfied. So what is there? Fair remuneration for work performed, reasonable working condition for the employees, opportunities for training and development, participation in management and prosperity of the enterprise, reasonable security of the services. So every management, now therefore we can say that every management aims to achieve the
organizational objective, the social objective, and the personal objectives. Now, how can we say that management is important? Yes, management is very, very important because management helps in achieving the organizational goals. Just now we have discussed that every business has some goals to be achieved and management helps in achieving these goals. Management increases the efficiency. We have also covered that management is a process which have these two keywords, efficiently and effectively. So this efficiency, doing the work, achieving the organizational goal effectively and efficiently increases the efficiency of the organization. Optimum utilization of resources. Management utilizes all the physical and human resources very productively. This leads to efficacy in management. It provides maximum utilization of the scarce resources by selecting its best possible alternate use in industry from out of various uses. So no resources are kept idle or the wastage of the resources are less. So we can say there is optimum utilization of the resources. It is essential for prosperity of the society. We have just covered the social objectives of the management, and because it has these social objectives, management helps in bringing prosperity to the society, and management helps in achieving the personal objective. Management through its personal objective helps to satisfy not only itself, not only the business, but also the people working. That means it is employer-employee friendly. Not only employer will prosper, but simultaneously employees are also given opportunity to prosper. Then comes the nature of management. Dear students, this term management is as old as civilization. Although modern organizations are having a recent origin, organized activity has existed since the time of ancient civilizations. Over a period of time, it has grown into a dynamic subject with its own special characteristics. Now, what we can say the management is actually? Can we say management is a science, or we can say management is an art? So let us discover that. Whether management is science or an art or both. What is an art? Art is the skillful and purposeful application of existing knowledge to achieve desired result. Art is concerned with personal application of knowledge. Some kind of ingenuity and creativity is required to practice the basic principles learned. So we can say that an art has the existence of theoretical knowledge. आप किसी भी आर्ट फॉर्म को देख लो, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, सब में थ्योरी होता है ना? तो इट हैज़ गॉट एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. पर्सनलाइज एप्लीकेशन. दो कुक एक समान खाना कभी नहीं बना सकते. सेम खाना दो कुक अलग अलग बनाएंगे क्योंकि फ्लेवर अलग आएगा. क्यों? सब इंग्रेडिएंट तो सेम डाला हुआ है, फिर अलग फ्लेवर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें उनका अपना पर्सनल टच है, पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज है. इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. ये कहा जाता है कि जो आर्ट, जो कला होती है आप में, जितने आप प्रैक्टिस करें, जितने आप उसमें नवीनता लाएं, वो उतना आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा. सो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड creativity. Now let us see whether management is qualifying some of these features or all features of art or not. Management can be said to be an art since it satisfies the following criteria. क्या criteria? A successful manager practices the art of management in day-to-day job, managing an enterprise based on study, observation and experience. जिस तरह हमने कहा कि कला से ही, प्रैक्टिस से ही आप में जो कला है वो निखरती है, उस तरह मैनेजर जो होता है वो डे टू डे लोगों को इस तरह मैनेज करता है कि उसकी जो मैनेजमेंट की जो कुशलताएं होती हैं, जो प्रतिभाएं होती हैं, वो निखरने लगती हैं. सो वी कैन से दैट कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट. और मैनेजमेंट, आप लोगों को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा बहुत थियोरेटिकल नॉलेज का जानना तो ज़रूरी है. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट नीड्स टू ऑल्सो फॉलो the theoretical knowledge to some extent. There are various theories of management as propounded by many management gurus which prescribe certain universal principles. A good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative and innovation. A manager applies this acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of the realities of a given situation. So, we can say that management is an art. Now, science. Can we say management is a science? What is science? Science is a systematic body of knowledge that explains certain general truth
और ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉ। तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं साइंस के? साइंस ऑल्सो हैज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, उसमें भी थियोरीज होती हैं। उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। फल जो है पेड़ से गिरा एप्पल, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ नहीं गिरेगा, पृथ्वी में कहीं भी चले जाओ आप ग्लोब में सब जगह गिरता है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। Can we say management is also a science? Let us explore. Management has got some features of science. What are that? Just as the systematic body of knowledge, management also has a systematized body of knowledge. It has its own theories and principles that have developed over a period of time. The principles of management have evolved over a period of time based repeated experimentation and observation. जिस तरह साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको एक्सपेरिमेंट्स और लैब में टेस्ट किया जाता है, उसके एक्सपेरिमेंट्स करके वो प्रिंसिपल्स डिराइव किए जाते हैं, उस तरह मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम लैब में नहीं करते लेकिन उनको ऑब्जर्व करके किया जाता है. Since the principles of management are not as exact as principle of science, their applicability is not universal. यही बात खाती है मैनेजमेंट और साइंस के बीच डिफरेंस आ जाती है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थियोरीज हैं, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी उनमें नहीं है. सो व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट. दीज प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट द साइंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस. सो हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट जो है वो एक एग्जैक्ट साइंस है, लेकिन मैनेजमेंट एक आर्ट है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन में भी पढ़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. सो येस, इट इज़ एन आर्ट बट इट इज़ नॉट एज एग्जैक्ट एज साइंस. तो हम उसे एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते. तो हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड अ साइंस are therefore not mutually exclusive but complemented each other. हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है लेकिन एक आर्ट है, और सिंस एक आर्ट है उसे हम डेवलप कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस से, क्रिएटिविटी से. एक मैनेजर जो है उसे डेवलप कर सकता है. लेकिन सिंस ये साइंस नहीं है, साइंस नहीं है का एक और रीज़न ये है बच्चों कि मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स and human behaviors are very very complex to predict. साइंस में क्या होता है, सारे थियोरीज जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. सो यू कांट प्रेडिक्ट एनी ह्यूमन बिहेवियर विथ फुल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. सो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट के तरीके मैंने एक्स बच्चे पे अप्लाई किया, वो तरीके हो सकता है कि वाई पे अगर मैं अप्लाई करूं तो सक्सेसफुल हूं या फिर सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती हूं. सो जस्ट वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट बट इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस बिकॉज इट हैज गॉट द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे? वी हैव कवर्ड टुडे, लेट अस recapitulate what we have read. We have covered what is management, what are the various objectives of management, what are the various characteristics of management. We have also covered as to whether we can say management is an art or management is a science. There are many more theories to be that we can explore. There are many more theories that we want to explore, and all the rest we would be covering in our next classes. Now, we will continue further management as a profession. So, before we need to understand what profession is. A profession is an economic activity that requires specialized knowledge and often long intensive academic preparation. So, we can say that it has a well-defined body of knowledge. All the professionals are based on a well-defined body of knowledge that can be acquired through instructions. That means formally you have to enroll into professional courses, you have to learn the knowledge imparted there to call yourself a professional. Second feature of a profession is restricted entry. The entry to a profession is restricted
through an examination or through acquiring an educational degree. ऐसा कोई भी जाके प्रोफेशनल नहीं बन सकता. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को हम प्रोफेशन कहते हैं. ऐसा कोई भी उठ के जाके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स नहीं बन सकता, बिकॉज एंट्री वहाँ रिस्ट्रिक्टेड है. आप पर्टिकुलरली मेडिकल की पढ़ाई करोगे तो आप डॉक्टर बनोगे, लॉ की पढ़ाई करोगे तो आप लॉयर बनोगे. सो द एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. Professional association, all the professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificate to practice and formulate and enforces a code of conduct. जैसे कि सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं और उनका उस मेंबरशिप, वो जो मेंबरशिप है वो कंपलसरी है. Ethical code of conduct. All the professions are bound by code of conduct which guides the behavior of its members. जितने भी मेंबर्स हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन के, दे आर सपोज टू बिहेव एथिकली. लाइक देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स विच द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली द प्रोफेशनल एसोसिएशन डिसाइड्स. एंड सर्विस मोटिव. ऑल द प्रोफेशंस आर अंडरटेकन और द प्रोफेशनल वर्क्स आर डन विथ अ मोटिव टू सर्व. So there is a service motive behind it. Let us now discuss whether management is considered as a profession or not. Management have some of the features of profession. Management is based on a systematic body of knowledge comprising well-defined principles based on a variety of business situations. Profession की तरह management भी systematic body of knowledge पे it is based on systematic body of knowledge, उस पे base करता है. There are several associations of practicing managers in India, like AIMA, which is All India Management Association, that has laid down a code of conduct to regulate the activities of their members. There is, however, no compulsion for managers to be members of such association. इसका ये मतलब है कि बाकी प्रोफेशन की तरह मैनेजमेंट में भी एसोसिएशंस हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन या मैनेजमेंट एसोसिएशन हैं, जिन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू किए हैं, लेकिन उन मैनेजमेंट एसोसिएशन में मेंबरशिप जो है वो कंपलसरी नहीं है. Anyone can be called a manager irrespective of the educational qualification possessed. जो कि एक इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट था प्रोफेशन के लिए कि प्रोफेशनल कहलाने के लिए आपको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन मैनेजमेंट में ये बात नहीं है. हम नहीं कह सकते कि किसी ने पढ़ाई नहीं की तो वो प्रॉपरली मैनेज कर नहीं सकता. Okay, to possess a specific degree is a second criteria and is not meant strictly. The basic purpose of management is to help the organization achieve its stated goal, that is profit maximization. यहाँ पे भी बिजनेस और मैनेजमेंट का जो ये पार्ट है वैरी कर रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशन का बेसिक मोटिव होता है सर्विस मोटिव, जबकि बिजनेस में सर्विस मोटिव होता है लेकिन उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो है टू अर्न प्रॉफिट. So we just can't say that management is exactly a profession. It is somewhat going to be a profession. Let us now read management and administration. According to Theo Heyman, administration means overall determination of policies, setting of major objectives, the identification of general purposes, and laying down of board programs and projects. It refers to the activities of higher level and lays down basic principles of the enterprise. यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कुछ लोगों का ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट्स अ वर्क ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज, सेटिंग ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव्स. अकॉर्डिंग टू न्यूमन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गाइडेंस, लीडरशिप and control of the efforts of the group towards some common goals. Whereas, what is management? We have already covered what is management, right? Management involves conceiving, initiating and bringing together the various elements, coordinating, actuating, integrating the diverse organizational components while sustaining the viability of the organization towards some predetermined goals. In other words, we say it is an art of getting things done through and with the people in formally organized groups. Some people say management and administration are used synonymously, some vary with the idea. So look at this picture. Administration and management, top, middle and lower. देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है टॉप मैनेजमेंट में ज़्यादा वाइड है,
लोअर मैनेजमेंट में वो नैरो होकर एकदम पॉइंटेड हो गया है, जिसमें वो लोअर मैनेजमेंट में बहुत कम है। मैनेजमेंट को देखिए, मैनेजमेंट का जो एरिया है वो लोअर लेवल में ब्रॉड है और टॉप में कम है। तो व्हाट कैन वी से conclude? The foregoing description reveals that both management and administration are based upon the same set of principles and functions. It may be possible to make theoretical and conceptual distinction between the two, but in practice, such a distinction is misleading. So, in order to resolve the technological conflict between administration and management, we classify management into administrative management and operative management. Administrative management involves determination of objectives and policies, whereas operative management is primarily concerned with execution of plans for the achievement of objectives. At every level of management, an individual manager performs both types of functions. Every manager spends a part of his time on administration management and the remaining time on operative management. So, let us quickly discuss whether there is a distinction between administration and management or not. We can differentiate them on some points. First one is nature. Administration is a determinative or thinking function, whereas management is a doing function. Whatever plans and policies are formulated are being implemented by the management. Type of work. Administration is concerned with determination of major policies and objectives, whereas मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज. यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पॉलिसीज बनाना और मैनेजमेंट का काम है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना. लेवल्स ऑफ अथॉरिटी. एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप लेवल का बेसिक काम जो है वो टॉप लेवल का होता है, जबकि मैनेजमेंट जो है वो मिडिल और लोअर लेवल का फंक्शन है. Administrative decisions are influenced mainly by public opinion. So, they are basically influenced by the public opinion, whereas managerial decisions are influenced by objectives and policies of the organization. Direction of human efforts. Administration is not directly concerned with direction of human efforts, whereas management is very much concerned and influenced by the human efforts. In case of administration, planning and control are the main functions, whereas in case of management, the main functions are directing and organizing. In case of administration, you need more of the conceptual and human skill, whereas in case of management, you need more of the technical and human skill. Where to use? Administration is basically used largely in government and public sector, whereas management is used in business organizations. Then illustrations. Who are basically we say are the administrators, the commissioner, registrar, VCs, governors, they occupy the administrative positions. And who are the managers? The managing directors, the general manager, the sales manager, branch manager, etc. So, they are the people who are in the management. So, dear students, what we discussed today is management is considered as profession. It can be said as an emerging profession. We have discussed the difference of opinion was already there in case of management and administration, but some people say it differs, some says it don't. If it doesn't differ, it has got some similarities, then the similarities and the differences both are to be studied. We have already covered what are the various differences between administration and management. Levels of management. Look at this picture. We have got 3 levels of management: the top level, the middle level and the lower level. Let us discuss all the levels in details one by one. The top level management is generally occupied by the ownership group. They elect their representatives as directors, form a board known as board of directors, which constitutes the top level of management. Besides the board, other functionaries including the managing director, general manager or chief executive to help directors are included in this level. It is the highest level in the managerial hierarchy and the ultimate source of authority in the organization. The top level managers are accountable to the owners and responsible for
overall management of the organization. So basically जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो ऑक्यूपाई करते हैं वो बेसिकली ओनर्स होते हैं. ओके, इट इज द हाईएस्ट लेवल इन द मैनेजरियल हायरार्की, और हायरार्की का ये सबसे ऊपर का पोजीशन होता है, इसलिए हम इसे टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं. एंड द टॉप लेवल मैनेजर्स आर अकाउंटेबल टू द ओनर्स and are responsible for the overall management of the organization. Overall ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का जो दायित्व होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का जो दायित्व होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजर्स के ऊपर होता है. तो क्या करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, का काम क्या है? मोस्टली द वर्क ऑफ थिंकिंग, प्लानिंग एंड डिसाइडिंग. तो उनका सबसे मेजर जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट या फिर टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं, वो है थिंकिंग, प्लानिंग एंड डिसाइडिंग. Therefore, they are also called as administrators and the brain of the organization. Dear students, brain क्यों कहा गया है? क्योंकि brain जो है वो सबसे ऊपर है ना, तो हायरार्की के सबसे ऊपर में टॉप लेवल में तुम्हारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, तो इसीलिए उनको ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है. और सिंस ये थिंकिंग फंक्शन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज, तो इनको एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कहा जाता है. डिटर्मिन्स द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इनका सबसे महत्वपूर्ण काम जो है, जो थिंकिंग फंक्शन है, उसमें दूसरा महत्वपूर्ण काम ये है कि दे डिटर्मिन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं. तीसरा देखते हैं, दे प्रिपेयर द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर जनरली मेड फॉर 5 to 20 years. लॉन्ग टर्म प्लान्स जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, ये टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं. कितने अवधि के लिए बनाते हैं? 5 से 20 साल के पीरियड के लिए बनाते हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज मैक्सिमम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिंस इन्हें ब्रेन कहा जाता है, ये सबसे ऊपर वाले दर्जे में बैठे होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास होता है और सबसे ज़्यादा पावर और अथॉरिटी भी इन्हीं के पास होता है. आखिरी, रिक्वायर मोर कंसेप्चुअल स्किल्स एंड लेस टेक्निकल स्किल्स. सो ये जो मैनेजर्स होते हैं, जो लोग टॉप लेवल पे बैठे हुए होते हैं, इनको अधिकतर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की ज़रूरत होती है. थिंकिंग फंक्शन करते हैं ये, इसलिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ज़्यादा इनको चाहिए देन दी टेक्निकल स्किल्स. देन कम्स योर मिडिल लेवल मैनेजमेंट. इन ऑर्डर टू फिल अप द गैप विच एग्जिस्ट्स बिटवीन फंक्शनल एंड ऑपरेटिव लेवल्स, some managerial positions are created at the middle level of management. देखिए, टॉप में तो आपके ब्रेन रह गए, नीचे तो लोअर लेवल रह गए. इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उस रोल को निभाता है. मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, डिप्यूटी मैनेजर्स, फोरमैन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. These executives are mainly concerned with the overall functioning of their respective departments. इसका मतलब ये है कि मिडिल लेवल मैनेजर्स के अंडर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं और इनका काम ये है कि वो ओवरऑल फंक्शनिंग देखें सभी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जो कि इनके अंदर आते हैं. They act as a link between top and the lower level managers. टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच ये लेवल आता है, तो हम कहते हैं कि ये एक लिंक सर्व करता है, एक कड़ी की तरह काम आता है टॉप और लोअर लेवल के बीच में. So let us see what these people or what these level of managers they do. They communicate with the top level management and the lower level management. तो उनका प्रमुख काम ये है कि ये कड़ी है, मिडिल जो लेवल है वो कड़ी है टॉप और लोअर लेवल के बीच. तो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, प्रमुखतर ये काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है. Executes or implements the policies and plans which are made by the top level management. अभी हमने कवर किया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का बेसिक काम तो ये है कि वो प्लान्स और पॉलिसीज बनाता है, मगर उसे इंप्लीमेंट कौन करता है? इंप्लीमेंट करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं. थर्ड, द मिडिल लेवल मैनेजमेंट हैज लिमिटेड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये टॉप लेवल के नीचे आता है, तो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजर्स एंजॉय करते हैं उतना मिडिल लेवल मैनेजर्स एंजॉय नहीं करते. तो हम कह सकते हैं कि द मिडिल लेवल मैनेजमेंट और द मैनेजर्स
are having limited authority and responsibility. They also give recommendations or advice to the top level management. Top level management को suggestions या advice भी वो दे सकते हैं. They prepare the short term plans of their departments which are generally made for 1 to 5 years. सबसे ज़्यादा अधिकतर ड्यूरेशन के जो प्लान्स और पॉलिसीज़ होते हैं वो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं 5 से 20 साल के लिए, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं दे प्रिपेयर द शॉर्ट टर्म प्लान्स फॉर देयर डिपार्टमेंट. अपने डिपार्टमेंट के लिए वो शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं जिनकी ड्यूरेशन जो होती है वो 1 से 5 साल के अंदर तक की होती है. These kind of managers they require more managerial and technical skill and less conceptual skill. अभी हमने कवर किया कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनको ज़्यादा कंसेप्चुअल स्किल की ज़रूरत होती है और टेक्निकल स्किल ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन मीडियम और जो मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं उनको ज़्यादा मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल चाहिए, कंसेप्चुअल स्किल्स जो है कम चाहिए. तो बेसिकली ये क्या काम करते हैं, जो ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस है टॉप लेवल से वो उनको रिसीव करते हैं और लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं. और लोअर लेवल उसका अगर कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ दुख या ग्रीवेंसेस हैं, वो उसे टॉप लेवल तक पहुँचाना चाहे तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो उसे मिडिल लेवल क्रॉस करना पड़ेगा. उसके सारे जो ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इट हैज़ टू पास थ्रू द मिडिल लेवल. So the middle level, this way we say, it serves as a linking chain between the top and the lower level. Then comes the lower level or supervisory level management. Lower level management is known as supervisory management because it is concerned mainly with personal oversight and directions of operative employees. ये जो level होता है, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन्हें हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट कहते हैं बिकॉज इट इज कंसर्न मेनली विथ पर्सनल ओवरसाइट एंड डायरेक्शंस ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉयज. इट कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर्स, सुपरिंटेंडेंट्स, फोरमैन, सेल्स सुपरवाइजर्स, अकाउंट्स ऑफिसर्स एटसेट्रा. सो बेसिकली जो लोअर लेवल्स में होते हैं किस तरह के एम्प्लॉय होते हैं, वो सुपरिंटेंडेंट्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, सेल्स सुपरवाइजर्स होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर्स होते हैं. सो बेसिकली ये करते क्या हैं, व्हाट डू दे डू? दे हैव लिमिटेड अथॉरिटी बट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स. इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये दे विल सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग द वर्क डन, वर्कर्स के द्वारा काम कैसे कराया जाए और वो हो रहा है कि नहीं, ये देखना लोअर लेवल मैनेजमेंट का बेसिक काम है. इसीलिए वो उनका जो ये काम है उसके अनुसार उनको अथॉरिटी नहीं मिलती. सो दे हैव लिमिटेड अथॉरिटी. दे डायरेक्ट्स द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज. उनके लेवल में जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके नीचे भी जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनका बेसिक काम होता है कि वो उनको दे यूज टू डायरेक्ट दिस एम्प्लॉयज और द वर्कर्स. दे मेक डेली, वीकली एंड मंथली प्लान्स. दे ऑल्सो प्लान बट not as the top levels are doing and not also as middle levels are doing. So they are making the plans which is which is made for the daily or weekly or monthly plans. They inform the workers about the decisions which are taken by the management. अब मैनेजमेंट अगर कोई डिसीजन लेता है टॉप लेवल में तो उसको वर्कर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है इस बात का ध्यान रखता है and it informs the workers about the decisions which are taken by the top level management. Basically the lower level management requires more technical and communication skill. Conceptual skill ज़्यादा नहीं चाहिए होता, तो इनको ज़्यादा सबसे चाहिए होता है technical और communication skill. And they maintain a link between workers and the middle level management. क्योंकि lower level management के अंदर जो है आपके वर्कर्स आते हैं, तो ठीक है ना, तो वो जो वर्कर्स हैं और मिडिल लेवल जो मैनेजर्स हैं उनके बीच की कड़ी का काम करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये डायग्राम को ज़रा हम अच्छी तरह से समझें. यहाँ मैंने क्लियरली दिखाया हुआ है टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है, और लोअर लेवल के अंदर देखिए वर्कर्स आते हैं. सो बेसिकली मैंने पोजीशंस और फंक्शंस भी यहाँ डिफाइन किया हुआ है. टॉप लेवल जो है उनका बेसिक फंक्शंस है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, और
क्या क्या पोजीशंस आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। मिडिल लेवल को देखिए, वहाँ आते हैं उनका बेसिक फंक्शन जो है आइडेंटिफाइंग द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग द लोअर लेवल्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन पोजीशन आते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स एंड मैनेजर्स। और लोअर लेवल में फंक्शन क्या है? कैरिंग आउट द ऑपरेशंस एंड देयर सुपरविजन्स। एंड कौन कौन पोजीशंस के लोग आते हैं? सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन। लोअर लेवल के नीचे आते हैं आपके वर्कर्स। साइड में देखिए मैंने दो एरोज दिए हुए हैं, एक ऑरेंज कलर का है जिसमें लिखा हुआ है अकाउंटेबिलिटी और एक ब्लू कलर का है जिसमें लिखा हुआ है अथॉरिटी। ये जो एरोज हैं इनका डायरेक्शन जो है सेम नहीं है। अगर आप अच्छे से देखें, अथॉरिटी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और जो अकाउंटेबिलिटी है वो नीचे से ऊपर की ओर दर्शाई हुई है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी जो है it always flows from upward. It is the lower level who enjoys the highest authority and the lower level enjoys the less authority. So top level enjoys highest authority, lower level enjoys less authority. और accountability जो है, सबसे ज़्यादा accountable कौन है? सबसे ज़्यादा accountable है lower level। किसके प्रति ज़्यादा accountable है? वो है top level की ओर। I think you all have understood the concept of the various levels of management. Now it is very very important that you should know why we are studying these levels of management, because in an organization when you are working, every organization, an organizational structure we can say, follows some hierarchy. Hierarchy जो है इसे कहते हैं कि authority जो है वो levels create करती है, and the authority it passes through this hierarchy, accountability is also passing through this hierarchy, and understanding this hierarchy is very very important. Unless and until we understand who are the people and what are their basic functions, how can we hold them responsible? How can we hold them responsible? That is why when we are reading management, it is very very important for every one of us to understand the various levels. These levels, as we have already discussed, starts with lower, middle and top, and below that, below the lower, you have got the workers. I hope you all have understood the various levels of management. Dear students, it is very important for every one of us to understand till whatever we have covered. It is very important for every one of us to understand, because unless and until you are clear with the concepts of administration, the concepts of management, the various levels, understanding the further concepts would be quite difficult for you. I hope all of you must have enjoyed the class. You must have understood whatever I have tried to communicate to you. I hope you have understood that. So I would like to conclude my session here only. Thank you.